Internet connection is very weak. I'm sorry for this lag in voices and everything. Okay. Guys, I would like your responses I need your responses very much in today's class, because हमको खुद नहीं पता like when you can hear me and when you cannot. Okay, so it will be better if you guys can reply at times. First of all, पहले बताइए all of you guys, am I audible properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you very much. So in the last lecture, we did 3 things mainly, and we were defining those terms, and we did a small numericals and relationships. The portion we covered was conductance. Secondly, also one more thing, guys, nobody will turn their cameras on today because my internet ऐसी अच्छा नहीं है, तो I don't know, it may get stuck or something. Okay. Conductance. Then we looked at conductance as G. Then we looked at conductivity, which we call kappa. Thirdly, we have molar conductivity, molar conductance. This is equal to, this is lambda m. And we have seen this. Now, there are a few points. Let me see what covered in the last lecture. Take a few notes regarding these 3 different terms only, and then we will start with the factors that affect the conductance. So please write note. We have seen that the conductance is equal to carbon. Sir, So your voice is I will breaking. say, Sir, your voice. is it any better now? Yes, sir. So from this equation, आप ये बताइए, Fadil, these 3 things we have covered in last lecture. वही हम बस यहाँ पे याद दिला रहे बच्चों को. We have not written anything else. ठीक है, so you don't need to write anything. Just keep your pen aside and answer. You guys need to answer. Okay, ठीक है. So first thing is that this conductivity, it is directly proportional to the volume. So if I will increase the volume, the conductance will increase. Correct, guys? Yes or no? Please tell me. This makes sense? Yes or no? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Yes, That means we can write volume अगर आप बढ़ाइएगा तो concentration घट जाएगा ना, because molarity it is equal to number of moles divided by volume. आपने volume बढ़ाया तो molarity क्या हो गई? घट गई, right? So here you are going to write conductance decreases with increase in concentration. है ना, उसी को उल्टा समझ लीजिए. जब आप मोलारिटी बढ़ाइएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो कंडक्टेंस भी घट जाएगा. ठीक है. सो कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन concentration. Second point we can write is that conductance increases with dilution. है ना, वॉल्यूम बढ़ा, पानी डालने को डाइल्यूट नहीं बोलते, जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते बढ़ जाएगा. नेक्स्ट थिंग इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो ये सवाल पूछा जाता है कि कंडक्टेंस का अफेक्ट बताइए व्हेन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज और डिक्रीज, एंड देन दे आस्क दिस विद कॉम्बिनेशन टू कंडक्टिविटी. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज. ये दिस कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी
depends on the amount of ions in 1 centimeter cube or 1 ml of conductivity amount of ions in Sir. 1 ml or 1 centimeter cube of ions. Sir, your voice is breaking Is it breaking for everyone? again, sir. Yes, sir. I'm uh, conductivity depends on the amount of ions in 1 centimeter cube or 1 ml of solution. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, you're audible. Okay, थोड़ा bear कीजिएगा आज की क्लास में, ठीक है ना? There is some problem that occurred just like after the Maghrib prayer, and Wi-Fi वाले को call किया, then they were like all our technicians are gone, so we cannot really send anyone. So what right now, एक तो दूसरी चीज, I'm not at home right now, so the internet, I don't have any network also, so I have placed my phone somewhere in the balcony and just hopefully no one snatches it away, and I am taking the class now. ठीक है, तो थोड़ा सा बेयर Yes, कर sir. लीजिए आज की क्लास में, and Yes, sir. It's hopefully better now. better now. Sir, So I can see that बोलते ही फिर से break conductivity. हुआ. अच्छा, maybe this screen share is taking a lot of internet. Let me use whiteboard maybe. ठीक है. How's it now? Any difference? It's white color, Yes, sir. sir. It's white color. No, you have to tell the difference in my voice. Is it fine or is it It's breaking, sir. अभी now? Hello. Okay, I think I'm not even audible now. Is it any better, guys? Hello. Yes, sir, we could hear right now. You can hear right now. Okay, hopefully you can hear me on my screen share also. Let's see. Sir, you're lagging again. I'm not writing anything. I'm just writing my. Can you see my screen, guys? Yes, sir. Yes, sir. आप बताइए, am I audible perfectly now, or is there any glitch? फिर हम और थोड़ा सा देखते हैं क्या करना है. It's actually breaking in between, but we could understand what you say. Like, it's okay, sir.
So saying conductivity depends on the amount of ions in solution. In solution. So you're completely glitching now. Now just give me a minute. How about now? So let me read some sentence. Conductance decreases with increase in concentration. Conductance increases with dilution. Conductivity depends on the amount of ions in 1 centimeter cube or 1 ml of solution. Could you understand what Now I it's said? better, sir. It's better. Okay. Thank you very much. What about Pia, Rachita, Alisa? Yes, आपको sir. पता Now है? it's better, sir. We could hear. Yes, sir. Okay. Yeah. So I was saying, क्या कह रहे थे भाई हम कह रहे थे हाँ conductivity depends on the amount of ions in 1 centimeter cube or 1 ml of solution. अब imagine करें आपके पास this is 1 ml, ठीक है? यहाँ सिचुएशन A, यहाँ पे आपके पास 10 मोल आ जा रहे हैं एक ही ml में, और ये सिचुएशन आपके पास B, यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास सिर्फ 1 मोल. Now ions are what? Ions are the charge carriers in the electrolytic conductance. और अगर आपको 10 मोल मिल जाए ions and if you're getting 1 mole ion, तो कहाँ पे कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? टेल मी गाइस, बोलो भाई. वेयर विल बी द ए में ज्यादा होगी, करेक्ट? यस और नो, प्लीज टेल मी. Yes, sir. Yes, as sir. the number of ions will increase in 1 ml, conductivity will also increase. ठीक है? Yes, sir. यहाँ पे आप लोगों को लिखना है conductivity depends on the amount of ions present in 1 ml or 1 centimeter cube of solution as the number of ions in 1 centimeter cube increases, the conductivity also increases. The conductivity also increases. Okay? And then you will write next point that conductivity decreases with dilution. यानी कि आप अगर पानी डाल दीजिएगा तो the number of ions per ml will decrease. When number of ions per ml will decrease, the conductivity will also decrease. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Yes, sir. Write this down. Raise your hand once you're done. तो हाँ, एक सवाल थोड़ा सुन लीजिए, उस बार लिखिएगा. एक सवाल आता है, कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन बट कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन. एक्सप्लेन. तो ये चारों पॉइंट आपको लिखने हैं, पांचों पॉइंट जो भी है. यहाँ से फॉर्मूला लिखिएगा, बोलेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस द कंडक्टेंस विल आल्सो इंक्रीज. दैट्स फॉर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन. तो लिखिएगा कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन. Hence, as the number of ions in 1 ml increases, the conductivity also increases. Therefore, conductivity decreases with dilution. बात समझ में आ रही है? ठीक है. Yes, So, sir. see in this one particular एक ही सेक्शन 5 आपके पास यहाँ पे क्या 5 पॉइंट्स है. Here you can also see MCQs. MCQs दिखने चाहिए आपको. Can you guys see MCQs from this part? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. बोलो, है ना? Yes, sir. What है ना? What is the effect of dilution on conductance? It increases, it decreases, it remains same, none of the above. है ना? Yeah, cannot say. Can you see assertion reason?
Can you guys see assertion reason from these points? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है ना? So while you are reading the notes, while you are revising some portions, आप अपने हेड, अपने दिमाग में ना प्लीज सवालों को भी जरा सोचा करें, ठीक है? क्या क्या टाइप से, एक तो डायरेक्ट सवाल आ सकता है यहाँ पे कि क्या इफेक्ट होता है, इट्स अ बेसिक क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क। उसके बाद प्लीज हैव सम वेरिएशन की assertion रीजन में किस तरह के सवाल आ सकते हैं, सो एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट व्हेन यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन, ठीक है? तो बेसिकली आपका मोटो ये होना चाहिए एग्जाम में कोई भी ऐसा सवाल ना हो जो आपने पहले कभी देखा ना, है ना? न्यू क्वेश्चन शुड नॉट बी देयर इन द एग्जामिनेशन। वो सारे आपके पास इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि सारे सवाल या तो आपने सोचे हुए या तो फिर आपने उसको असल में किया हुआ भी, ठीक है? चलिए, रेज योर हैंड वंस यू आर डन राइटिंग दिस पार्ट। और थोड़ी गुजारिश आप लोगों से ये है दैट हम थोड़ा बीमार पड़ने वाले ऐसे लग रहा है हमको, एक गला वाला खराब हो गया है, हैव सम कफ एंड ऑल, तो दुआओं में याद रखें। आप उधर मिडिल ईस्ट वाले, सऊदी वाले उम्रा के लिए जाते रहते हैं, वीकेंड आ रहा है, उम्रा में अगर जाएं तो प्लीज दुआओं में याद रखें। दिस फॉर एवरीवन। Will do. Will do, sir. Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। और खुद को भी थोड़ा, आई एम एक्चुअली इन दिल्ली राइट नाउ, दैट इज व्हाई थोड़ा सा मौसम इधर उधर होने से मैं आई ट्रैवल्ड अ लॉट इन दीस फ्यू डेज, वरना आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ रियली वेल। बीमार वार नहीं पड़ने देते जनरली। वेटिंग फॉर यूसुफ, अलीजा, फादिल एंड मीर हुसैन। मीर हुसैन तो डजंट इवन टॉक, कुछ बोलते नहीं है, कुछ नहीं। आप लोगों को पता है अब वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन मोर थिंग इन द रिपोर्ट्स, नंबर ऑफ वर्ड्स स्पोकन या फिर परसेंटेज के हिसाब से, लाइक हाउ मेनी टाइम्स अ स्टूडेंट स्पोक इन द क्लास, तो उससे इंटरेक्टिवनेस पता चलेगा। सो दोज हु डू नॉट इंटरैक्ट, तो वो भी रिफ्लेक्ट होगा कि भाई आपका बच्चा क्लास में कुछ बोलता ही रिस्पॉन्सिव ही नहीं है। we'll have percentage, like for example Priya's contribution was 20, जैसे कितने स्टूडेंट हैं? प्रिया, डेबोरा, रजिता, सफिया, यूसुफ, फादिल, अलीजा एंड मीर। सो हियर वी आर हैविंग 8 स्टूडेंट्स, ठीक है? तो आउट 8 स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन मान लीजिए मेरा हट जाएगा, जो भी हमने बातें की वो हट जाएगा, ठीक है? फिर 8 स्टूडेंट्स पे से कंट्रीब्यूशन आएगा कि फिया का इतना कंट्रीब्यूशन है, दैट 50% ऑफ द टाइम आउट ऑफ द स्टूडेंट्स फिया ने ही बोला, बाकी किसी ने बोला ही नहीं, तो 50%, दैट मींस फिया हैज गुड कंट्रीब्यूशन। देन फिर उसके बाद किसी और का, फादिल ने इतनी दफा बोला, यूसुफ ने इतनी दफा बोला, सफिया ने इतनी दफा बोला, सो दैट वुड बी आल्सो टेकन। ओके, चलिए नाउ राइट द टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलर कंडक्टेंस। फैक्टर्स affecting molar conductance. Factors affecting molar conductance, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। So here I will initially explain certain factors, और उनको समझना बहुत ही ज्यादा आसान है, that is why I will explain them and then you will write it down. First of all, it will depend on the nature of electrolyte. Whatever I am going to write, you don't have to write it now because I am explaining it. Okay, I will give you time to write it down. अभी कुछ मत लिखिएगा। बस क्या है आपके पास? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लाइक द इलेक्ट्रोलाइट दैट यू हैव टेकन, जिस चीज की सोल्यूशन है, दैट सोल्यूशन कैन आइदर बी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाउ ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल हैव lambda m इसका higher होगा, and the weak electrolyte will have lambda m lower, because weak electrolyte does not dissociate completely. Strong electrolyte, they almost dissociate completely. Correct guys? Got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है। Second is the size of ion. You all know that when we are talking about molar conductance, molar conductivity, it's about how are the ions moving in the solution. So if the size of ion is very large,
तो उसका मूवमेंट स्लो होगा या फास्ट? बोलिए गाइस. Slow होगा sir. Slow. And if the ion is small, its movement will be fast. So we Movement can will be say fast. that Yes sir. so lambda m is inversely proportional to the size of ion. हादिल बोल रहा सब हम बोलेंगे आज. Size of ion. Got it guys? Yes or no? Please tell me. Pia, Fadil, Deborah, Aliza. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. अच्छा. Okay. ठीक है. एक तो साइज ऑफ आयन हो गया. देन वी हैव द टेम्परेचर. ठीक है. अब बताइए थर्ड में टेम्परेचर जो है आपका, प्लीज डोंट राइट इट, हम बहुत अच्छे से लिखाएंगे आप लोग को, अभी समझ लीजिए सर. टेम्परेचर जब बढ़ाइएगा आप, तो आयंस दे विल मूव फास्टर और दे विल मूव स्लोली. when you are going to increase the temperature, what will happen to the motion of the ions? They will move faster or slowly? Move faster, sir. Move faster. So Faster. on increasing the Faster. temperature, Yes sir. correct? Increasing the temperature, the lambda m also increases. Is this clear? Yes or no? Please tell me guys. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, just give me a minute. Can you write this down? वही सारी चीजें हैं. There's nothing different. Nature of electrolyte, the lambda m of strong electrolyte is higher than lambda m of weak electrolyte. Size of ion, smaller the size of ion, greater will be the ionic mobility and higher lambda m. Temperature, the interionic interaction decreases with increase in temperature, leading to greater ionic mobility and increase in lambda m. What is interionic interaction? So when you have positive and negative ions, they will interact with each other. ना दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहेंगे. But as you increase the temperature, दो वो interaction कम होता जाएगा. That is why they will not be stuck at one place. They will be moving very fastly. Write these 3 points down. Raise your hand once you're done. Just a second. Sorry. Raise your hand once you are done writing. Sir, what is SE? Strong electrolyte. Okay, sir. Okay, Rajita has done. Rajita, अच्छा आंसर शीट आपको नहीं मिला ना शायद? Sorry? No. You haven't got it. What was the problem, Rajita? Was it like this कि the question that you saw in the examination, you have not seen them, you have not seen those questions previously? ऐसा था कुछ? You knew the concept, but the question was new in your exam. Not in reality, I think I was just very confused. I feel like I had the concept right, but I was just confused between everything. I wrote Rajita. There is a noise in the background. I cannot really differentiate your voice and the other voice. So, am I audible Sir. now? You're audible. Yes, Rajita, tell me. Like I was saying, I feel like I knew the concepts, but I was very confused between them. Like for haloalkanes, I did amines. For amines, I did something else, and I think that's where I saw my answer paper, and then I felt like I wrote answers, but I wrote them for the wrong questions, something like that. So you could not write the answers as the teacher wanted. I mean, whatever. That means all the questions that you saw, they were almost new for you, right?
because if you remember like 5-6 standard में जो सवाल हम पढ़ते थे फिर रट के जाते थे, right? And then when you have to write that answer, you knew exactly what to write. So even though you knew the concept, you were not really confident about what to write in the answer, correct? Yes, sir, especially for the conversions as well. Acha, conversion. Yes, sir. I think that's where I lost most of my marks. Conversion. Did you watch Hal? No, you have not done Halo Alkene Halogen, no? And reasoning questions as well. Most of the questions I feel like I've never seen them. Reasoning question, reason. You have reason. Yes, sir. Yes, reason questions. वो हमने देखा and they are completely from the notes, you know. I saw your paper. Yes, sir. That's why Completely from what? Completely from my notes. Oh, your notes. I see. Okay. Okay, I saw your paper exactly, but इसीलिए हमको थोड़ा समझ नहीं आया कि marks आपके क्यों नहीं आए. And what happened, guys? Yusuf, Fadil, Safia, you're not done. Done, sir. Done na? Raise your hand. Sir. हाँ बताए. So I didn't get the third point, temperature wala. And this interionic interaction wala. Yes, sir. Yes, sir. See, when we have ions, we will have positive ions as well as negative ions. Okay? So positive and negative, they will be attracting each other. Correct? Yes, sir. So positive चाह रहा है कि negative electrode के पास जाए, but the negative ion is attracting और उसको electrode के पास जाने नहीं दे रहा है. Correct? If the temperature is low. But if I'm going to increase the temperature, that attraction of positive negative will be overcome. So that positive negative attraction will not be there. So they will be just randomly moving, and that is why the electrode can easily pull the positive electron, positive ions, and the negative electrode can and the positive electrode can pull the anions. Got it, Father? Interionic interaction में positive negative के बीच में जो attraction होता है उसका. Okay, yes, sir. Right. So next we have concentration. Okay, this is important. That is why it's called example. Fourth is concentration. You guys can lower your hand. So in concentration, we know that lambda m, it is equal to, what is the formula? Tell me, guys. Last class mein karaya tha humne. You need to remember this formula. You need to memorize it. Okay. Lambda m is equal to, boliye. K into 1000 by m. Kappa into 1000 divided by m. Now I can say that lambda m, it is inversely proportional to molarity. So inversely proportional to molarity, meaning lambda m is inversely proportional to concentration. And molarity is nothing but concentration only. Correct, guys? Yes, sir. That means I can say lambda m, it is directly proportional to the dilution. Concentration का कम करना मतलब dilution increase करना, right? You can decrease the concentration by adding more water, है ना? उसी को बोलते हैं dilute करना, concentration कम करना. So lambda m is directly proportional to dilution. Is this clear? So please tell me, guys. Yes, sir. Then please note this down, and then you will write this point. When the solution is diluted, the lambda m of electrolyte increases because dilution with dilution, this point. Why it actually increases is because when you dilute a solution, the dissociation of electrolyte also increases. You can think about it in this way. You have a small amount of water and then you're adding more sugar, more sugar, more sugar. Okay, so that all the sugar will not be dissolved. Even if you add salt, after a particular time, some salt will not be dissolved at all. But as soon as you add more water, that means you're diluting the solution, then the dissociation happens and then the remaining salt also dissolves. You can say that with dilution, dissociation of electrolyte increases. Now, when dissociation of electrolyte increases, as soon as electrolyte dissociates, we get more ions. And ions are the charge carriers. So if I have a large number of ions on dilution, then what will happen? The
lambda m is also going to increase. Write this down. Raise your hand once you're done. Okay, Fia is done. Waiting for Yusuf, Aliza, Deborah, Fadil, Rachita, and Sophia. Waiting for Fadil and Rachita. Just waiting for Fadil now. चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिए. So let us suppose we have a solution and then we are diluting it. Okay. So we have the lambda m of it and then we are increasingly diluting it. So as you are diluting the solution, the lambda m will increase, but it is not going to keep on increasing, right? There will be a particular value of lambda m jahan pe, so let us suppose there is some particular value of lambda m that even if you dilute more, that lambda m is not increasing from that particular value. Correct, guys? Yes or no? Please tell me. Because when the 100% dissociation has been reached, all the electrolyte that you have added has been dissociated. You have added enough water that all of them has been dissociated. At that time, you can say that our molar conductance has found its limiting value. That is the limit of molar conductance. Now, even if you add more amount of water, the molar conductance, molar conductivity is not going to increase. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. That there will be a particular value of lambda m that even if you add more water, the lambda m is not going to increase. Okay. So that point is known as infinite dilution. Okay. So please, you will write the topic, that is infinite dilution. You have limiting molar conductance. Both the topics you can write. Limiting molar conductance. Limiting molar conductance. Please write. Limiting molar conductance. This is denoted by lambda m and not, और इसका मतलब क्या होता है? When the concentration is zero, if you have infinitely diluted a solution, जो बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, तो apparently the concentration will be so small that उसको आप zero बोल सकते हैं, lambda m not, or it is also denoted by lambda m infinity. Now infinity denotes the infinite dilution. Both of these things mean same. इनका मतलब कुछ अलग नहीं है, but a not का मतलब हो गया concentration zero, तो उसी का मतलब क्या होता है? Infinite dilution. Make sense? So please tell me, guys. You are not going to be confused. Sir, is it regarding like standard? Standard नहीं. It's not like standard. हमने बताया ना, here we have zero, right? So zero means the concentration is zero. Infinite means the dilution is infinite. Both of them are meaning, वो मतलब उनका same चीज है, but अलग-अलग तरीके से represent कर रहे हैं. We are representing it in different ways. एक जगह we are talking about concentration. In one of the cases, we are talking about dilution, but they mean the same thing. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Limiting molar conductance को कैसे denote किया जाता है? और Yes, आपके yes. टेक्स्ट बुक में it is generally denoted as not. किसी एक से denote किया गया, but कुछ भी आ जाए confuse मत हो जाइएगा, ठीक है? So please write. When the solution is when the solution is so dilute that the lambda m reaches limiting value. When the solution is so dilute that the lambda reaches the limiting value is called, that value is called
limiting molar conductance. This dilution is called, this dilution is called infinite dilution. So you can also say that lambda m at infinite dilution is called lambda m naught, है ना? मतलब molar conductance at infinite dilution is called limiting molar conductance. Got it, guys? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Now इसमें एक और चीज लिख लीजिए, denoted by. If you are using small lambda, तो lambda m naught या फिर lambda m infinity. If you are using capital lambda, as we have done in the previous class also, no, that molar conductance can be represented by uppercase lambda and lowercase lambda also. तो ये भी यूज किया जा सकता है, ठीक है. बस देखिए ये साइन सारे बता दे रहे किसको कंफ्यूज ना हो जाए कि सर क्या ही आ गया था वो समझ नहीं आया, ठीक है. चलिए. After this you will write effect of dilution on lambda m of weak and strong electrolyte. Are you done with till here? Raise your hand. Raise your hand if you're done till here. Waiting for Safia now. Oops. Yeah. The topic. Effect of dilution on molar conductance of strong electrolyte and weak electrolyte. Okay. So first of all, we are going to look at strong electrolyte. Okay. Now we all know that on dilution, the lambda m increases or decreases. Tell me, guys. Increases. sir. Increases, correct है? ठीक है, very good. It increases. So ध्यान दीजिएगा, you don't have to write anything now. ठीक है, हम आपको लिखा देंगे, अभी कुछ नहीं लिखना है आपने. So here we are having concentration and here we are having lambda m. Now if I start here, ठीक है, so when I am diluting, the concentration will increase or decrease. Concentration will increase or decrease if I am diluting the solution. Decrease. Decrease. So if it is decreasing, then I will move on the right side or the left side. इस point पे हैं अभी हम. Left side. Left side, ठीक है. Okay, and when the concentration is decreasing, lambda m increases or decreases? Decreases. अरे increases यार, अभी तो सब बोल रहे थे. अच्छा. याद कर लो इसको, increases ना, तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा. बोलो guys, correct है? Yes or no? Yes, sir. Make sense? All of you guys, tell me. Yes, sir. But see, this is very important. इस ग्राफ में एक चीज साइड में मार्जिन में कहीं पे भी लिख लो, ठीक है. अक्सर ग्राफ को आप लोग ऐसे देखते हो, करेक्ट है गाइस? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. इस ग्राफ को ऐसे देखना है, the other way around. If you are not going to look that way, you will be getting confused later on. Right now you can understand it very easily because हमने यहाँ से start किया है.
you have to see this graph that we are diluting the solution. That means we are decreasing the concentration. We are decreasing the concentration. Okay. Now, this type of linear graph was not found directly with the concentration, but rather with the root of concentration. Okay. This is just a mathematical, we can say, to ease up the formula and everything, to ease up the graph. When root C was, yeah, thank you very much. Convenience, mathematical convenience. That when we take the And root why is of it not touching the top and bottom? why it is not touching the top and bottom? Very good question. See, the thing is, you cannot have zero concentration. If you will have zero concentration, practically you cannot have zero concentration, na Fia? Yes, sir. Still, it won't have zero concentration. Now, if you are going to touch the top part, at this point, tell me, what is the concentration at this point? Maximum. Concentration, रे भाई, concentration x axis में ऐसे नीचे देखा जाता है. Concentration minimum. Minimum, अरे यार zero हो जाएगा भाई. This is question. Minimum तो छोड़ो, तुम zero हो जाएगा ना, Fia? Yes, sir. It would be zero. Makes sense? Yes or no? Please tell me, Fia. Complete sense, Yes. ना? It makes. ठीक है, ठीक है. Now, can the concentration practically be zero? No, sir. No. ठीक है. तो आपको समझ में आ गया that we cannot have this. मतलब y axis को touch नहीं करेगा. Next, let us see why it cannot touch the x axis. ठीक है. Let us suppose it is touching the x axis here. At this point, tell me, there is some concentration, correct? Yes, sir. No, this is the concentration. What is the lambda m? Lambda m is. Tell me. Lambda m is, ठीक बोल रहे थे आप, बोलिए. According to the graph, tell me, it's zero, right? Yes, sir. Is it possible that we have some ions in the solution, but still the lambda m is zero? Lambda m will be some very less. It can be very less if I increase the concentration, but it will not be zero, right? So you understand this point, yes or no? Please tell me. Yes, sir. Now, next thing is, but we have seen that infinite dilution is something, and when concentration is not practically zero, but we can say that it is reaching zero because we have diluted the solution so much. Now, in order to do that, what do we do? In order to find what is that lambda naught, we extrapolate this particular graph. Okay, so till here, let me just wait. ठीक है ना, ऐसा बुरा मत मानिएगा, सर आपने तो टच करा दिया, ये बोलते कुछ होगा नहीं, ध्यान दीजिएगा guys. Till here you are having the experimental values. After that, what you are doing, you are extrapolating the graph. Got it, guys? Yes. So now please tell me, why are we extrapolating? Because practically, so we cannot have zero concentration, but we can extrapolate this graph and we can say that, okay, fine, this is what this value here, whatever value we are getting on the y-axis, this will be my lambda m naught. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. What about Yes, others? Yes, Rajita, Yes. Safia, Yusuf. Yes, all of you guys, make sense? Yes, sir. Thank you very much. Now you need to write this. आराम से लिखिएगा. If there is, you will first write it down. There will be some points that you don't understand. तो उसके लिए you can ask me, okay? See, starting me, strong electrolytes are almost completely dissociated on dilution. Therefore, on dilution, the increase on lambda m is slow and linear. बहुत अचानक से, there is no rapid increase in lambda m. There is no rapid increase in lambda m. Why? Because the ions are almost dissociated. So slowly, थोड़ा ions जो भी बचा कुचा होगा 99% से 100% में कितना ही difference आ जाएगा. When 99% of the ions electrolytes are already dissociated, you will reach 100%, but that increase will be very linear and it will be not very high. There will be no abrupt increase. Okay. Now, after that, we have seen lambda naught m of strong electrolyte can be determined by extrapolating this plot. जो plot हमने दिया है. This plot follows the Debye-Hackel equation. Debye-Hackel, they just did some experimentation कि concentration लिया उसका lambda m, concentration लिया उसका lambda m, अलग-अलग concentration में lambda m लिया. They got some points here और उन points को उन्होंने just ऐसे एक line खींच दी. And this is the particular equation.
अच्छा, इक्वेशन आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. इट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c. फॉलो करता है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c. नाउ दिस x इज रूट c and this m is some constant b and this c is lambda naught m. ठीक है, so this is the Debye-Huckel equation. y क्या है आपका, y is lambda है. ठीक है, चलिए प्लीज राइट दिस डाउन. अब लिखने के बाद अगर कुछ डाउट है तो फिर पूछिएगा. ठीक है, प्लीज राइट दिस डाउन आराम से. Raise your hand once you're done writing. Waiting for Aliza, Deborah, Fadil, PR, Sophia, and Yusuf. Rajita is done. एक और चीज हम बता देते हैं, मे बी कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं. सर ये C क्या है सर? सो दिस C मींस लैम्डा m एट एनी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन. जैसे यहाँ पे 0 लिखा है ना हमने, तो इस 0 का मतलब क्या है? लैम्डा m एट 0 कंसंट्रेशन. इस C का मतलब क्या है? लैम्डा m एट एनी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन. ठीक है, मतलब इन जनरल जो लैम्डा m होता है ना वही. नॉट द इनफिनिट रेड्यूशन. Waiting for Aliza, Fadil, and Fia. Waiting for Aliza and Fia. Okay, everyone is done. You'll write one more point. Lambda MC is equal to lambda m naught when C is equal to 0. Concentration जब 0 हो जाएगी तो lambda MC क्या हो जाएगा? Lambda naught m क्यों हो जाएगा? This was asked in as a MCQ in last year paper. Lambda MC will be equal to lambda naught m when अलग अलग वहां पे कंडीशन दी हुई थी, है ना? I hope you have written this down. Right, next, weak electrolyte. We have seen the effect on strong electrolyte. Strong electrolyte on the right meaning here. In weak electrolyte, you will write since weak electrolytes are not completely dissociated, on dilution, the dissociation occurs sharply and lambda m increases exponentially. Lambda m increases exponentially. So if you draw a plot between the lambda m and concentration for weak electrolyte, please don't write anything now. ध्यान से देखिएगा. So the graph looks something like this.
Okay, as you can see, it is exponentially increasing, right? So the graph is between lambda m and root c again. Now the everything is fine. We expected this particular type of graph because in weak electrolyte we don't have complete dissociation. So when you are adding even small amount of water, more and more dissociation are happening. है ना? ऐसा नहीं कि 99% से 100% जाना है. We are going from, let us suppose, 70% to 100%, 60%, 30%. Some electrolyte, they even have 10% degree of dissociation. That is why when you are adding even small amount of water, more and more dissociations are happening, and the lambda m, it increases exponentially because a large amount of ions are now present because of the dilution. Earlier we had electrolyte that were in combined state, but as soon as we are adding more water, we are getting more and more ions. Okay. Now we got an exponential graph. The problem with this particular graph is that we cannot extrapolate in order to get the lambda naught m. So weak electrolyte के साथ एक पंगा ये हो जाएगा, that we cannot determine the lambda naught m from the plot. Exponentially का मतलब होता है बहुत अचानक से इंक्रीज करना. एक्सपोनेंशियल ग्राफ नहीं देखा आपने? एक लीनियर ग्राफ होता है, एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है. Here you have what bio or maths or both? Bio, sir. Only bio. लेकिन 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो ग्राफ पढ़ा होगा ना, उसमें तो होता है. Yeah, समझ में आया? studied, but I don't remember. अरे हाँ, तो भाई इतना तो बताओ ना कि ऐसे ऐसे करके कुछ होता है, ऐसे होता है, मतलब ऐसे कर्व सा होता है. You remember that? Exactly correct. है ना? You remember at least that much? है ना? Yes, So जब भी, and when you have x square, x cube, इस तरह की चीजें होंगी, then you will get curvy type of graph. When you have x to the power 1, you will get linear type of graph, straight lines होंगे. ठीक है? So exponentially का मतलब वही होता है. Got it? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है? So we'll write next point, the graph between lambda m and root c is not linear. Therefore, we cannot extrapolate the graph to determine lambda naught m for weak electrolytes. Can you see a assertion reason type of question from this point? Sir. दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा है? बताइए. दिख रहा है सर. दिख रहा है सभी को? सफिया, यूसुफ, रजिता, फिया. Yes, sir. You can see an assertion reason type of question from this particular point, right? Now see, these small points ना, ये चीजें बच्चे छोड़ देते हैं. मतलब छोड़ क्या देते हैं, मतलब उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं. मतलब अगर ये assertion reason का सवाल आ जाए ना, तो this would be considered a tough question. पता नहीं कहाँ से दे दिया. Why we cannot determine? You imagine, I think बहुत सारे बच्चों के यहाँ electrochemistry school में हो गया होगा. Just the notion of this particular point that you cannot determine the lambda naught m of weak electrolyte, ये कहीं आपके इसमें मतलब बातों में भी नहीं आया होगा. It would not be even present in the conversation of the whole electrochemistry chapter. But this is so important that it leads to the next topic. I mean, in NCERT it is written like this, that ये problem है, इस problem का solution. So the solution for this particular problem is the Colrosh law that you are going to learn in the next जो आपका topic आने वाला है, that is Colrosh law. Okay, so this particular, I feel it is very important part because this line, this point is leading to the next topic. And so you can understand the importance of this particular point. हो सकता है किसी न किसी पेपर में ये सवाल जरूर आ जाए, that why we cannot determine the lambda naught m of a weak electrolyte. Reason में, because the graph of lambda m and root c is not linear for weak electrolyte. ठीक है? Now इसी, अब देखिए भाई, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला है. एज यू कैन सी, अब नहीं डिटरमाइन कर सकते तो क्या आएगा? कॉलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन इसको बोला जाता
write the topic. अच्छा, आप लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा? Are you guys done writing? Is there anyone who has still not written this? Anyone still writing? Anyone still writing? No, sir. No, sir. Right, next. Call Roshni. Of independent migration. And this is also known as or law of independent migration. ठीक है, आप सिर्फ इस लॉ को पढ़िएगा ना, उन्हें क्या है, ये लॉ है, ये तो हम भी दे सकते थे, इसमें क्या ही नया दे दिए, बहुत ही आसान सा लॉ है. Colruy's law of independent migration says that the molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution, यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं लैम्डा नॉट m of NaCl, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, just listen to me. If you want to determine the lambda naught of NaCl, ये लॉ कहता है, if you determine वगैरह कुछ नहीं कहता, बोलता है सीधा that lambda naught of NaCl किसके बराबर होगा, lambda naught of Na positive प्लस lambda naught of Cl negative. इससे ज्यादा आसान, इससे ज्यादा ऑब्वियस कोई बात हो सकती है? टेल मी गाइस. अरे बोलो भाई. No, sir. नहीं ना, ठीक है. सो दिस इज द कॉलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, बट इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसके जो एप्लीकेशंस है, दे आर ह्यूज. सो इट्स वेरी ऑब्वियस, बट बहुत ही. सो द व्हाट डज द लॉ से, इसको लिख लीजिएगा जरा, जस्ट अ सेकंड. एंड स्पेशली इट वाज गिवन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, तो इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट आना जरूरी है. The lambda naught m of weak electrolyte is equal to the sum of lambda naught m of its constituting ions. Make sense? Yes or no? Please tell me the law. Yes, sir. है ना, एग्जाम्पल के बाद ज्यादा सेंस बनता है, अदरवाइज सर सम का मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूटिंग आयंस का मतलब क्या हुआ. ठीक है, सो इसको जनरली ऐसे शो करते हैं दैट लैम्डा नॉट m is equal to lambda naught of cation plus lambda naught of anions. So I will write a few, और आप लोग बताइएगा, है ना, लिख पाएंगे क्या नहीं लिख पाएंगे. lambda naught of NaCl is equal to lambda naught of Na positive plus, एक ना थोड़ा सा रूल और कन्वेंशन को थोड़ा सा फॉलो करते हुए चलते तो अच्छा लगता है. व्हेन यू हैव इलेक्ट्रोलाइट तो अपर केस, व्हेन यू हैव आयंस तो लोअर केस कर देना है. lambda naught of Na positive plus the lambda naught of Cl negative. जस्ट कन्वेंशन और कुछ नहीं है, मार्क्स वार्क्स नहीं कटेंगे आपके अगर आपने अपर केस लोअर केस कुछ भी यूज किया. हम खुद ही इंटरचेंज कर देते हैं, बट lambda naught of, if you are having MgCl2, then ध्यान दीजिएगा यहाँ, प्लीज drop your pens and listen to me very carefully. Here we are having one Mg2 plus ion. We have the Mg2 plus ion and we have two ions of Cl negative. So इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, because when you dissociate MgCl2 तो आपको क्या क्या मिलता है, you get Mg2 positive and you get two Cl negatives, right? दो Cl negative का मतलब क्या, एक Cl negative आयन, दूसरा Cl negative आयन, right? So the MgCl2, the lambda naught of MgCl2 will be equal to the molar conductivity at infinite dilution of Mg2 plus molar conductivity of at infinite dilution of Cl negative plus molar conductivity at infinite dilution of Cl negative. दो बार Cl negative तो इसको 2 lambda naught Cl negative बोल दिया गया. Similarly, tell me lambda naught of AlCl3 क्या हो जाएगा? Will be equal to lambda naught of Al3 positive plus, बोलिए गाइस, अरे बोलो भाई, Three lambdas Cl lambda negative. naught,
हाँ ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, नाउ आई Yes, होप sir. यू कैन डू। अगला लिखिए लैम्डा नॉट, ये कोई अभी हम नहीं खोले। I was about to say कोई ऐसे स्टेशन वगैरह में है क्या, पता चला घर में हुआ तो ऑफेंड हो जाएंगे। NH4OH is equal to lambda naught of NH4 positive plus lambda naught of OH negative. You have to know how the ions are dissociating, है ना, अदरवाइज वो फिर आपको कंफ्यूजन रहेगा हमेशा कैसे होना है। लैम्डा नॉट ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाए CH3COOH, तो दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO negative plus lambda naught of H positive, right? And for example, if you have lambda naught of BaOH whole twice, इसके लिए लिखना पड़ेगा आपको lambda naught of Ba2 positive plus twice of the lambda naught of OH negative। ठीक है, सारी चीजें हम लिखा दी ताकि आप लोगों को कुछ नया ना लगे जब कुछ आए। And from here you can generalize that lambda naught m of any weak electrolyte or any electrolyte will be equal to the number of cations multiplied by the limiting molar conductance of that cation plus the number of anions present multiplied by the limiting molar conductance of those anions. What is N positive? Number of cations. N negative क्या है? Number of anions in electrolyte. Write this down. Raise your hand once you're done. Sir, can you please zoom out? Yeah, sure. Thank you. जल्दी लिखिए फिर अली सर। Waiting for Aliza, Fadil, and Safia. Everyone is done. Now, ये तो आपके पास
when you are asked that what is Colrausch law वगैरह, तो आप ये पॉइंट लिख देंगे. Now the applications of Colrausch law, ठीक है, तो प्लीज राइट applications, और यहीं से ज्यादा सवाल आएंगे, ठीक है ना. whenever we are writing applications, तो applications से ही सवाल बनते हैं. The number one application is to determine lambda naught m of weak electrolyte. ठीक है, तो कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए सीधा सीधा सवाल आएगा आपके पास. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू वन क्वेश्चन, और फिर उस सवाल को आप कीजिएगा. आफ्टर दैट you will get a new question from me. For example, से start करते हैं. So you have been given this information that lambda naught m of CH3COONA is x Siemens centimeter square per mole. NaCl का दिया हुआ है, HCl का दिया हुआ है, and they are asking you to calculate the lambda naught m of CH3COOH. All of you are able to identify ना, कुछ ऐसा बहुत अजीब चीज नहीं हो रहा है यहाँ पे. Yes or no, please tell me guys. You have been given the limiting molar conductance of a few electrolyte, और उसमें उसके बाद एक का पूछा हुआ है आपसे. ठीक है, तो कैसे करना है ऐसे सवालों को, प्लीज ध्यान दीजिए. पहले अच्छे से समझेंगे एक्चुअली में, मतलब जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं तब क्या हो रहा है एक्चुअली, एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा जो शॉर्ट मेथड है ना उसको हम लोग अपनाने की कोशिश करेंगे. सो दोज हु आर एबल टू, those who are comfortable with the longer method, they can use that. Those who are comfortable with the short method, they can use that also. ठीक है ना, तो उसमें ऐसा कुछ एबिलिटी की बात नहीं जिसमें आप कंफर्टेबल हो जाए. The first thing that we have to do is, समझने के लिए we have to dissociate all the givens. ये हमारे पास क्या given है. So given we have CH3COONA, CH3COONA. So when this will dissociate, it will dissociate into CH3, COO negative and Na positive. Secondly, when we have NaCl, तो NaCl किसमें dissociate होगा बोलिए guys? NaCl will dissociate into Na plus Cl minus. Na plus and Cl minus. Yes sir. Thirdly क्या होगा बताइए, तीसरा क्या लिखेंगे, बोलो भाई. अरे यार, HCl. thank you very much. HCl will dissociate into H plus Cl minus. HCl H minus. plus, yes very good, H plus plus Cl minus. ठीक है. Now these are the givens. ये आपके पास given है, इसमें x है, this is y and this is z. Then you have the target. What is your target? Target is CH3COOH. So you have to dissociate that also. CH3COOH will dissociate into, tell me guys what? बोलो भाई. CH हाँ बोलो, CH3 3CO plus and H minus. अरे H माइनस नहीं होता रे भाई, H प्लस ना होगा है, एसिड H प्लस होगा यार. अच्छा जी. H माइनस, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव अभी कराया था हमने यहाँ पे, हैं बताइए. Yes sir. अब आपके पास गिवन है, then you have the target. Tell me, गिवन में CH3CO नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है, X में आ रहा है, Y में आ रहा है, Z में आ रहा है, बोलो भाई. X में आ रहा है. ठीक है, X में आ रहा है, X में आ रहा है. तो हमको तो चाहिए X, लेकिन X का हमको Na पॉजिटिव नहीं चाहिए, तो माइनस Na पॉजिटिव. CH3CO नेगेटिव मिल गया, yes or no please tell me guys. अरे बोलो भाई, मिल गया. ठीक है, अब बताइए H पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है, X में आ रहा है, Y में आ रहा है, Z में आ रहा है, Z में आ रहा है. सो आई नीड द Z, सो प्लस Z, लेकिन माइनस क्या करेंगे Z से, बोलो भाई. H प्लस तो चाहिए, क्या नहीं चाहिए, अरे बोलो भाई, Cl माइनस नहीं चाहिए, राइट. सो Cl माइनस. ठीक है, अब जो पॉजिटिव को नेगेटिव्स को एक साथ करेंगे तो यू विल गेट दिस, यू आर गेटिंग लैम्डा नॉट m ऑफ CH3COOH, है ना. क्या मिलेगा आपको, दिस विल बी इक्वल टू X प्लस Z माइनस, अब ब्रैकेट में कर देते हैं, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. करेक्ट है गाइस, बोलो भाई. क्या दिक्कत किसी को, when you I am having those things in brackets, तो अंदर में पॉजिटिव आ जाएगा ना, तभी तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा.
अरे भाई बोलो भाई, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मेक सेंस ना? ठीक है। और Na प्लस और Cl नेगेटिव को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स या वाई या जेड? Why? वाई। तो एक्स प्लस जेड माइनस वाई विल गिव यू lambda naught of CH3COOH. मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस। Yes. Yes, sir. कितने लोगों ने ये चीजें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ है किसी के यहाँ स्कूल में? किसी नहीं हुआ अभी? हुआ है sir. Yes, ये sir. पार्ट किया था Sir, आपने? can you explain me again, sir? I did not understand. कहाँ से, स्टार्टिंग से? Yes, sir. अच्छा, टारगेट हमारे पास है ना, वी हैव CH3COO नेगेटिव NH पॉजिटिव, करेक्ट? किया? Yes, sir. पक्का टारगेट समझ में आया? पक्की बात है ना भाई? टारगेट नहीं समझ में आया? CH3COO negative. नहीं वो नहीं बोल रहे, वो तो दिख रहा है आपको। व्हाई दिस इज द टारगेट, बाकी 3 टारगेट क्यों नहीं है, वो समझ में आया? Sir. नहीं ना, तो देखिए वो टारगेट इस वजह से बिकॉज उसका लैम्डा नॉट m निकालना है। तो the electrolyte whose lambda naught m you want to find will be the Target. टारगेट। ठीक है, तो उसको डिसोसिएट करके लिखना है। डिसोसिएशन यू विल हैव टू नो। अगर आपको डिसोसिएशन नहीं आ रहा, देन यू विल प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसमें यू विल सी सर्टेन आयंस आर रिपीट, उसके आप पास आने चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। Can you Now, explain me that XYZ, sir, like the last one? अच्छा यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ तक? No, sir. तो वो तो फिर लास्ट वाला क्यों पूछ रहे हैं आप? ठीक है, आई एम सेइंग you need CH3COO negative, yes or no, please tell me. You need that because it is in the Yes, sir. target. Where do you find CH3CO negative? ये गिवन है आपके पास ना, XYZ। अच्छा, ये XYZ समझ में नहीं आया किसी को तो हम बता दे रहे, X, Y and Z will be values. ओके, Yes, sir. X की जगह कोई वैल्यू होगा, Y की जगह कुछ वैल्यू, Z की जगह कुछ वैल्यू होगा। Now, where do you find the CH3CO negative? X में, Y में या Z में? X. X में, बट X में दोनों चीज आ जाएंगी ना, CH3CO negative and Na positive also. Na positive तो नहीं चाहिए, what do we want? Only CH3COO negative. ठीक है, आई होप तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। क्या Okay, ख्याल है? sir. आगे ओके सर, आप बताओ आया कि नहीं आया? You understood ना? Yes, sir. That part understood. Okay. Now I am just rearranging this कि minus Na plus and Cl negative कर दिया हमने, because both of these are in having minus sign. उन minus sign को common ले लिया, अंदर Na plus and Cl negative कर दिया। Make sense? Okay, sir. Yes sir बोलो यार। Okay सर लगता है ठीक है, चलो हम मान लिया आपकी बात। Okay, sir. फिर okay सर बोल रहे हैं आप। I am saying say yes sir. ठीक है, ओके ओके क्या बोलते हैं? ठीक है भाई, जो तू बोल रहा है ठीक है, हम मान लिए उस बात है ना। यस सर, ठीक है, आई अंडरस्टैंड इट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और यू आर जस्ट एक्सेप्टिंग व्हाटएवर आई एम सेइंग? I did not get the last point, sir. You're rearranging it. So you're writing it as X plus Z. So minus is common, you're taking outside. So Na plus Cl. That X plus Z is okay. And minus Y is NaCl. So you're writing that. That's correct? That's it. Yeah, that is just mathematics there, और कुछ नहीं किया वहां पे। NaCl why? Because NaCl is present यहाँ पे। दोनों चीजें कहाँ मिल रही हैं आपको? You're getting it in the Y. Got it? Okay, sir. Understood. Understood ना? वो मैथ से बस वहां पे, और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए। आपको लगा ऐसे कुछ बहुत ज्यादा हाई फाई हो रहा है? थोड़ा टफ होना चाहिए था, ज्यादा आसान हो गया। Is it too easy? Now understood, sir. It's easy. Understood. ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक जब आपके पास हो गया है, आई होप यू कैन डू अ क्वेश्चन ऑन इट। छापिए छापिए इसको छापिए। नाउ दिस इज ये सवाल, ऐसे सवाल आने के चांसेस हैं। ठीक है, इससे एक लेवल हार्ड आता है सवाल, उसके चांसेस उतने नहीं होते आने। वो भी करेंगे हम लोग, ताकि आप लोग को देखा हुआ रहे सारा कुछ। I think there is something in my chat. Raise your, is this application? हाँ एप्लीकेशन में ही तो है। We are determining the lambda naught m of weak electrolyte ना, एप्लीकेशन ही तो है।
Raise your hand once you are done. You want me to zoom out कर लेते हैं हम. I think आज आपका टेस्ट नहीं हो पाएगा. फिर भी टेस्ट कीजिए, ठीक है ना. उसमें से कुछ सवाल तो होंगे. नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा टेस्ट. तो आज आपका कोई दिक्कत की बात ही नहीं है. रेज योर हैंड वंस यू आर डन. एक सवाल करेंगे फिर क्लास एंड करेंगे. Waiting for Aliza, Deborah, Fadil, Fia, and Safia. Aliza and Fia, just waiting for you guys now. Okay, great. ठीक है, ठीक है. थोड़ा थोड़ा ना दिमाग लगा के प्लीज करो ये सवाल, ठीक है. बहुत लॉजिकल है. पहले डिसोसिएट करना है भाई, जल्दी कोई नहीं करेगा, ठीक है ना. शॉर्ट शॉर्ट वगैरह मत कीजिएगा. अच्छे से आराम आराम से सबको डिसोसिएट कीजिए. जो टारगेट में आपके पास आयंस आ रहे हैं उनको लाने की कोशिश कीजिए. उनके साथ जो आ रहा है उनको माइनस कीजिए. माइनस वालों को इकट्ठा कीजिए एंड देन इकट्ठा करके देखिए एक्स वाई जेड में आ रहा है, ठीक है. चलिए स्टार्ट डूइंग इट. हैंड्स. Alisa, can you send me on the WhatsApp? कैसे किया है आपने? The picture. हाँ हाँ, पिक्चर. Okay, okay.
करेक्ट है आपका आंसर यूसुफ योर आंसर इज आल्सो करेक्ट वेरी गुड बट आई नीड टू सी ओके सो सेंड योर आंसर्स ऑन माय व्हाट्सएप हमको देखना कैसे किया आप लोगों ने Sir, I didn't understand much, sir. I don't know नहीं how to नहीं do this. ठीक है नहीं नहीं आप डिसोसिएट कर सकते हैं I am doing, but I'm doing it in the opposite way. Like it's opposite. you show me what see देखिए prerequisite knowledge is NH4Cl जब डिसोसिएट होगा तो किस किस में टूटेगा NaOH when it will dissociate then it will dissociate into what ions NaCl when it dissociates it will dissociate with NaCl okay थोड़ा सा यहाँ पे कुछ आ चुका है when NaCl dissociate it dissociate into what ions ये आपको आना चाहिए उतना कीजिए उतना like do whatever you आपको समझ में आ रहा है ना you do not worry about calculating the lambda naught of NH4OH ठीक है you just dissociate these four जो 3 given है और एक टारगेट मेक सेंस फिया क्या करना है Yes, sir. ठीक है okay, Yusuf has sent me देखो ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड it will dissociate very good therefore let's see very good Yusuf correct okay yes correct very good Aliza makes sense Fadil very good Fadil correct hai makes sense and let me just see the process now NH4Cl dissociates into okay NaOH dissociate into NaCl dissociates into then NH4OH dissociates into then NH4 ये कहाँ से मिलेगा ठीक है extra is that then okay yeah correct Fia has done something देखिए आप उल्टा कर रहे हैं वो होगा ही नहीं यार अलीजा सॉरी अलीजा माय बैड अलीजा फिया आपको हमने क्या करने बोला आप क्या कर रहे हैं बताइए हमने बोला डिसोसिएट करो ना इनको इफ यू आर नॉट एबल टू डिसोसिएट देम देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट द आंसर्स आल्सो गेट इट यस और नो फिया Yes, sir. तो डिसोसिएट कहाँ किया आपने लाइक आई हैव रिटन दीस पॉइंट्स ना एरो कुछ ये करना पड़ेगा आपको मेक सेंस Okay, sir. कैन यू डू दिस इसमें आपको प्रॉब्लम है अगर है तो बताइए I इसमें will आपको try. प्रॉब्लम ठीक है Sir, आदिल टेल मी sir, rest of the questions as well, X, Y, Z हम लोग को दिया रहेगा कि we'll be having numbers instead. नंबर होगा भाई नंबर ओ तो Okay. हम मैथ्स तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं ठीक है नंबर होगा वहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हमको नहीं करा ना दैट इज व्हाई Yes, sir. ऑल ऑफ यू गाइस विल डू इट लाइक दिस ओनली ठीक है ना आप एक्स वाई जेड कर लीजिएगा एंड देन आफ्टर यू आर डन विद एक्स वाई जेड ना आप प्लग इन कर दीजिए वैल्यूज ठीक है बार बार नंबर मत लिखिएगा ओके आप Yes, sir. अनदर थिंग इज दैट वेयर आर यू फादर Sir, फादर yes, Where are yes, I'm at home. you're at home only हाँ, बैकग्राउंड इंडिया में बात हो रही है इसलिए. अच्छा सो आई एम सेइंग कि अब आपके स्कूल का हमको नहीं पता ठीक है ना कि आप एक्सरसाइज करके करें तो मतलब पता नहीं आपका टीचर आई डोंट नो वो मार्क्स काटते तो उनको एक बार दिखा दीजिएगा ना शो देम दिस पर्टिकुलर प्रोसेस दैट सर कैन आई डू इट लाइक दिस एंड देन वी कैन वी प्लग इन द वैल्यूज अच्छे से ना रिस्पेक्टफुली आस्क देम देयर परमिशन इफ दे से यस Okay, sir. बट इन बोर्ड्स आई हैव द गारंटी ठीक है ना अगर ऐसा कुछ हो गया आपके मार्क्स कट गए अगर तो फिर हम क्लेम कर लेंगे आप हमको बोलिएगा आई विल हेल्प यू इन क्लेमिंग दैट दिस प्रोसेस करेक्ट पूरे मार्क्स मिलने चाहिए अगर आपका आंसर सही आया प्रोसेस सही है तो ठीक है यू कैन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन कुछ आपको मतलब चिंता करने की जरूरत ही नहीं है एक्स वाई जेड आप लोग ऐसे करिएगा देन यू प्लग इन द वैल्यूज एंड देन यू गेट द आंसर
आपने स्कूल में पूछ लीजिएगा। ओके Yes, डेबोरा, sir. आई वाज लुकिंग एट योर आंसर। या डेबोरा करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट है, बहुत सही। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास स्पीड आएगी ना, स्पीड आएगी इफ यू कैन सी द डिसोसिएटेड आयंस, यू कैन सी द डिसोसिएटेड आयंस विदाउट डूइंग इट। मतलब आपको ये जो गिवन डेटा है ना, यहीं पे डिसोसिएटेड आयंस अगर आपको दिख जाए और इसके डिसोसिएटेड आयंस अगर आपको दिख जाए, then you can directly write the answer. I hope you can see that happening. Yes or no, please tell me guys. Yes, sir. है ना, थोड़ा बहुत। that जैसे ये अगर आपको लिखना ना पड़े, एक तो लिखने से आसानी होती है कि मिस्टेक्स कम होते हैं, आपने डिसोसिएट किया है, डिसोसिएट आपको लिखना ना पड़े, यू कैन मेंटली सी इट, देन यू कैन मेंटली राइट कि अच्छा एक्स है, यहाँ पे Na+ ज्यादा है तो Na+ को हटाना पड़ेगा और Na+ के साथ Cl को हटाना पड़ेगा, ऐसे से होगा। ठीक है, सो वहीं से बस क्विकनेस आएगी, स्पीड वहीं से आएगा। अदरवाइज ये जो आई मीन डिसोसिएशन ही थोड़ा सा टफ पार्ट है इसमें। अदरवाइज कॉलरॉस लॉ जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का है वो ज्यादा टफ नहीं। बच्चे कहते हैं सर हमको कॉलरॉस लॉ में डिफिकल्टी आती है, बट वो डिफिकल्टी उनको कॉलरॉस लॉ में नहीं आ रही है, उनको आ रही है डिसोसिएट करने में। उनको पता ही नहीं NH4Cl डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा। ठीक है, सो ट्राई टू व्हेन यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ डाउट किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो उसको थोड़ा पिनपॉइंट करें कि डाउट इस टॉपिक का है या पुराने टॉपिक का है ना। तो जो पुराने गुनाह है उनके लिए आपको तौबा करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू स्पेंड सम टाइम। ठीक है, तो पुरानी चीजों में जनरली यही होता है इन केमिस्ट्री, दैट पुरानी इक्विलिब्रियम चैप्टर में यू विल हैव डिसोसिएशंस ऑफ दीस थिंग्स। वो अगर नहीं ठीक से रहता तो फिर डिसोसिएशन नहीं आता फिर बच्चों को। ठीक है, फिया ने भेजा, फिया आई एम लुकिंग एट योर आंसर, NH4Cl का डिसोसिएशन वेरी गुड, NaOH का डिसोसिएशन वेरी गुड, NH वेरी गुड, तब तो सही है। फिर आप बताओ ना फिया, यू टेल मी, यू हैव डिसोसिएटेड NH4 लाइक दिस ना, NH4OH, Yes, sir. NH4OH will dissociate into NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, करेक्ट है। NH4 पॉजिटिव कहां मिलेगा आपको, X में, Y में या Z में? सी आस्क योरसेल्फ दीस क्वेश्चन। X. X Cl now what? minus NH4. अरे अरे भाई भाई आराम से बोलो, X के बाद X minus NH4. X minus NH4, NH4 नहीं चाहिए क्या आपको? माइनस तो वो करते हैं जो नहीं चाहिए। as soon as X you write minus Cl. make sense, then Plus प्लस OH कहां मिलेगा आपको? OH. OH कहां मिलेगा आपको, X में, Y या Z? दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क। OH नहीं लिखना है आपको, you have to ask where Y. will I get OH, Y में मिलेगा। what is extra in Y, Y में OH के साथ कौन आ रहा है? Na. तो I will have to minus Na, Na. make sense? Now I will rearrange X plus Y minus in brackets Na positive plus Cl negative, right? Now this will be X plus Y minus Z, make sense? Yes or no, Pia? Yes, sir. What happened to the guys भाई? फादिल चले गए, अलीजा इज या डेबोरा, रजिता है, बच्चे इतने कम कैसे हो गए अचानक? यूसुफ इज हियर, अलीजा इज नॉट हियर ओनली ना, नहीं अलीजा है, माय बैड अलीजा, सॉरी। कौन नहीं है फिर? फादिल नहीं है। Who else is not here? Mir. Deborah is. Rajita, I can see you. No, sir, I said Mir. Mir. Mir is not here. Okay. Mir तो क्या है, वो पता नहीं, आंसर देते ही नहीं, हम क्या ही बोले। And Learnivio is not here. Okay, fine. और अचानक से इतना, and फादिल, फिया is here, रजिता is here, डेबोरा is अलीसा, यूसुफ, ठीक है, ऑन के ठीक है। Any doubt here in this particular type of questions? Tell me. सर हाँ हाँ बोलिए। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, क्या क्या क्या? लाइक यू सेड के इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हम डायरेक्टली कर सकते हैं तो। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हम डायरेक्टली कर सकते तो ना। लाइक हाँ मेंटली मेंटली, हाँ 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 हाँ, we मार्क्स can do नहीं it कटने। mentally. बोर्ड्स में नहीं कर लेंगे। ओके ओके ओके। बोर्ड्स
ठीक है, Yes. स्पोर्ट्स Sir, में तो can you write it with substituted element also? what substituted element? No need to substitute any element. What element I have to substitute? I don't know what you are trying to say. So आप instead किस of X, no need to write NH4. अरे यार सफिया, हमको समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे No, हो. so she's asking you if you should dissociate it, like NH4, right? In X, you have to write NH4 plus Cl minus. वो आपको अभी समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हैं. Sir, can you please scroll down a little? हाँ जी. Yes. So you see that NH4Cl is equal to X, right? So we usually in the last problem we wrote it as NH4 plus Cl minus, right? We dissociated it like that. She's asking you if there's no need to dissociate it. Exactly, sir. That's what I'm asking. Thank you, Rajita. You don't need to do anything. You just need to, you know what you need to write. You need to write only this on the board. थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखें तो I will show you guys a question as well as the answer that was given by the board कि वो क्या चाहते हैं आप लोगों से. ठीक है, just give me a minute. Marking schemes, chemistry. 21314151. इस साल तो सिर्फ मतलब बहुत ज्यादा सवाल आए थे. दे जैसे NH इसमें generally what I am saying the question that was present is they gave the lambda naught of NH4 positive, they gave the lambda naught of OH negative और आपसे पूछा है what is the lambda naught of NH4OH. तो basically उनको बस add कर देना है आपको, है ना. If you add both of these things you will get lambda naught of NH4. तो confusion वाला part आपको दिख नहीं रहा अभी. You guys please start doing the